If there is a land on earth where not even a handful of people are happy, it is Pakistan-occupied Kashmir. From primary school students to the so-called government employees, everybody is going through one or the other form of state-manufactured crisis. While education doesn't find considerable space in the region's policies, unemployment and poverty is widespread. Today, we take you to Muzaffarabad, where IT instructors who are responsible for making students tech-savvy are protesting against the government for not receiving their salaries for 18 months. Have a look. This group of men and women is on indefinite strike against the administration in illegally occupied POK. They are school and college IT instructors who will continue to hold peaceful demonstrations until their pending salaries for 18 months are paid to them. With an aim to impart digital education to students and to make them tech-savvy, the so-called government of the region in 2018 had appointed nearly 450 instructors in schools and colleges across the region. Youths were lured into applying for the job in the name of permanent government positions and lucrative incentives. But the protesters say they were betrayed in just 6 months of their appointment, when they were not only told that they were appointed contractually, but were also shown a letter stating the completion of their term. After days of sustained protests, the government renewed their contracts, but only to harass them more. 18 months have passed, their salaries are on hold. They want it back. दो 2018 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी आईटी बोर्ड के थ्रू, लेकिन अभी तक उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सका। हम जो लोग थे हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे और अभी तक हम लोग जो है नॉर्मल मिज़ानिये में एजुकेशन के अंदर शिफ्ट नहीं हो सके। और स्टार्टिंग में हमें 17 स्केल में 25,000 में जो है मुजफ्फराबाद के लोगों को पुंछ में तैनात किया गया और पुंछ के लोगों को बाग में और बाग के लोगों को पुंछ में तैनात किया गया इस तरह से। और 25,000 में किस तरह हमारा गुजारा होता था। अब तकरीबन 6 महीने जब हमारी एक्सटेंशन ख़त्म हो गई तो उसके बाद 18 महीने हमारी सैलरीज़ को रोक दिया गया। अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जितने भी लोग हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें ये बताएं कि अगर इनको 1 महीने की सैलरीज़ नहीं मिलती तो इनको कितनी मुश्किल होती है, लेकिन हमने 18 महीने किस तरह गुजारा किया होगा। The issue of withholding salary is not just limited to one department or one set of people, but it is pervasive across the government institutions in POK. From teachers to construction workers, from clerks to college professors, everybody can be seen protesting against the government at one point or another. While most of them protest against the non-payment of salaries, many others have been demanding elevation of their status of employment from contractual to permanent. But the authorities, who work fundamentally at the whims and fancies of Islamabad and not as per the legal framework, have turned a blind eye to their demands. अब जो है स्कूल भी खुल चुके हैं, 3 महीने भी गुजर चुके हैं, ना तो अभी तक वो हुकूमत ने इस पर कोई पॉलिसी बना सकी है और न ही हुकूमत हमें एक्सटेंशन दे सकी है। 30 जून 2020 से हमारी एक्सटेंशन भी ख़त्म है, तो उसके बावजूद भी हुकूमत ने अभी तक जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाना, जो मतलब वो काम बनता हमारा, लेकिन ये हमें फैसिलिटेट करना ये हुकूमत का काम होता है। लेकिन हुकूमत इस कौम इस बात पर सोई हुई है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ जब भी उनके पास जाओ डेट पे डेट दे रहे होते हैं, कोई मामला नहीं समझ आ रही है हुकूमत क्या कह रही है। एक तरफ से हमें कहते हैं कि आप आईटी के एम्प्लॉई हैं, आईटी वाले कहते हैं आपको एजुकेशन के हवाले कर दिया है। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से हम पहले भी 2-3 बार मिल चुके हैं, उन्होंने हमें यकीनदानी कराई थी, बल्कि हमने रिटर्न फॉर्म से उनसे लिखवाया भी था। उन्होंने कहा था जी आपका काम विदिन 2 वीक्स हो जाएगा, लेकिन वो 2 वीक्स की जगह अब 1 महीना गुजरने के हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ।
While there has been a repeated chest thumping by Pakistani Prime Minister Imran Khan, who boasts of doing remarkable things for people of Kashmir, the reality is rotting in sharp contrast to his claims. Discrimination is widespread and development is absent in POK. Human rights are violated with impunity and arbitrary arrests are an everyday phenomenon. People do have a right to protest, but their voice is muzzled with brute high-handedness if the authorities find their dissent even remotely threatening to their rule.